Assalamu alaikum, dear students. Today we are reading a poem that is The Road Not Taken. ये क्लास 9th की इंग्लिश बुक में है. पोएम है, लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अमेरिका के एक बहुत बड़े शायर ने. तो आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. पहले पोएम का पहला सेंटेंस आप पढ़ते हैं. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो पहले इस पोएम का जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन. तो रोड नॉट टेकन एक अलामती पोएम है. इट इज़ ए सिंबॉलिक पोएम. द रोड्स here, the road which we are discussing in this poem is not actually the road. There is a deeper meaning. Road is actually the choice of the life. The choice of the life that is not being taken by the person. The poet अपने बारे में बताया, road not taken, जिंदगी की वो choice जो मैंने उस वक्त नहीं अपनाई. तो ये सिंबॉलिक पोएम है. तो जब इंसान एक ज़िंदगी की एक चॉइस लेता है तो उससे कितनी डिफरेंस क्रिएट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो वी आर हैविंग हियर द रोड नॉट टेकन. टू रोड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड. डाइवर्ज हमारा पहला वर्ड है. टू वर्ड्स डाइवर्जेड इन ए येलो वुड. दो रास्ते थे. डाइवर्जेड, दे गॉट सेपरेटेड इन ए येलो वुड. एक येलो वुड में वो सेपरेट हो गई. टू रोड्स, दो रास्ते. डाइवर्जेड, गॉट सेपरेटेड इन ए येलो वुड, एक जंगल में जो जर्द पत्तों से भरा पड़ा था. एंड सॉरी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. सॉरी, मैं दोनों पर नहीं चल सका. ट्रैवल सफ़र करना, बोथ दोनों. एंड बी वन ट्रैवलर, तो ये नहीं हो सकता था कि मैं दोनों पर चलता और मैं एक ही ट्रैवलर था, एक ही मुसाफिर था. लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर ठहरा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैंने दूर तक देखा एक रास्ते को, इतनी दूर तक जितनी दूर तक मैं देख सका. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं दूर तक देख सका. टू वायर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मैंने ये देखा कि ये जो रास्ता है ये कहाँ फिर झाड़ियों में खो जाता है. अंडरग्रोथ इज द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. तो इस तरह ये पहला सिचंजा खत्म होता है. तो इससे समराइज करेंगे. टू रोड्स वर देयर दैट गॉट सेपरेटेड इन ए येलो वुड, इन ए येलो फॉरेस्ट. And I felt regretted that I could not travel both of them because I was a lone traveler. Then I stood thinking, which road should I take? And I looked down on one as far as could to where it bent in the undergrowth. I saw that maybe in the distance it would be then getting under dense growth of plants and these bushes. Here we are getting yellow wood. ये जो yellow wood है, जर्द रंग का ये जो फॉरेस्ट है, ये अलामती तौर पर I have told you that it is symbolic poem. Symbolism इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. Yellow wood दरअसल उस दुनिया को कहते हैं जहाँ लोग बहुत अब ज़िंदगी गुजार चुके हैं. ये दुनिया बहुत पुरानी हो चुकी है. तो बहुत पुरानी दुनिया को यहाँ येलो वुड कहा गया है कि देयर आर एज्ड पीपल, द पीपल who have spent enough life in this world. The world is very much old now. These trees in the wood are taken as the people in the world. Now they have lived enough life. And the poet is a newcomer to this world. वो अपना तजुर्बा बताता है that two roads diverged in a yellow wood. I came to this world. I saw two choices in this worn out world, and I felt a regret that I could not travel both of them and be one traveler. Then I stood to see that which option had not been utilized by the people.
For that I saw that maybe at the distance one of the roads would be getting disappeared under the growth of these bushes and small plants. तो मूविंग टू अनदर, अब हम दूसरे स्टेंजा पर मूव करते हैं. Here it is. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was glossy and wanted wear, though a lot of that the passing there had worn them really about the same. Then took the other. Here are some results. जब मैंने पहले रास्ते को बगौर देखा कि ये कहाँ पर फिर अंडर ग्रोथ में गायब हो जाता है, मैंने फिर सोचा चलो दूसरे रास्ते पर चलते. देन टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, वो नहीं जो मैंने देखा कि कहाँ तक जाता है कैसा है. आई टुक द अदर, मैंने दूसरा चुन लिया. जस्ट एज फियर, वो भी इसी जैसा था. एज गुड, एज फिर मीन्स एज गुड. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे लगा कि इस पर बेटर क्लेम है. बेटर क्लेम मीन्स कि यहाँ भी कुछ ये भी ऐसा होगा कि इस पर भी ज़्यादा लोग नहीं चले होंगे. मुझे लगा कि इसी पर जाना चाहिए था. बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वियर, ये मुझे कैसे क्यों लगा? बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी, इस पर बहुत घास उग आई थी. एंड वॉन्टेड वियर, एंड पीपल हैड नॉट वॉकड अपॉन इट्स टू दैट मॉर्निंग, उस सुबह को लोग उस पर चले नहीं थे. इस पर बहुत घास आ चुकी थी और इस पर चलने की ज़रूरत थी. आई फेल्ट इट इज़ ए बेटर क्लेम फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा चांस है, लोग इस पर ज़्यादा नहीं चले हैं, सो आई शुड पाइनर अपॉन इट. दो as for that the passing there had worn them equally about the same. दो हालांकि जो ही मैं उस पर चला तो मुझे पता चला कि इस पर भी बहुत सारे लोग चले हैं, तो उन्होंने इस रास्ते को भी बहुत ही ऐसे घिस घिस कर बेहाल किया है जैसे पहले रास्ते को. So the second stanza could be summarized like this. Then took the other, मैंने after that I took the another path, just and I could see that it was as beautiful as the first which I had inspected, and I thought that it could have more amusement and more claim for me, because it was having more grass and it was having more this dense growth, undergrowth, small bushes and grassy lands. So I thought that it wanted where I need to walk upon it, because so many people would not have been walking upon it. But when I walked upon it, I saw that it was worn equally by the people as has been the first one. So here are some words. It is, we are having this, in these words, other means the other, this road. Then fair is beautiful, good. Then we are having this better claim, means having the better prospects of being this untrodden. And then is grassy, full of grass. Wanted, where means I needed to walk upon it because too many people have not walked upon it. Then we are in other words, the same means it was same to same, worn out by the people as well the first. Now moving to the third stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to away, I doubted if I should ever come back. तो उसी सुबह की बात करता है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, उस सुबह को दोनों रास्ते सोए पड़े थे इन लीव्स, पत्तों के नीचे. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, उन पत्तों पर जिन पर कोई पाँव नहीं अब चल भी पड़ा था, जो इन्हें ये सियाह करता. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने क्या किया, मैंने जो पहला वाला रास्ता इसलिए रखा वहाँ कि इस पर कल चल पड़ूँ. यट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ए वे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो उसी रास्ते से कुछ और रास्ते निकल आते हैं. आई डाउटेड, मुझे शक हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि कभी मैं वापस आ भी सकूं और उस पहले वाले रास्ते पर चल भी सकूं.
So summarize it. And both that morning equally lay in leaves. And that morning I could see that both the roads that would diverge in the this yellow wood were equally laid in the under the leaves. They were as if sleeping under the leaves, under those leaves that nobody had trodden them black, nobody had walked upon them and made them blackish. Then I thought of keeping first road for the next day. I was not knowing that when I'll be going on certain way, it would be giving way to newer ways. Then I started doubting that, oh, I should possibly never come back and trod on the first way. Now, चौथे स्टेंजा पर आते हैं. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood. I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. मैं ये लोगों से कहता फिरूंगा with a sigh, गो कि मैं आहें भरता रहूंगा उस वक्त. Somewhere ages and ages hence, कभी कभार आज के बाद यानी फ्यूचर में टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते थे जो जुदा होते थे एक जंगल में. एंड आई और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मुझे तब लगा कि एक पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, मैं उसी पर चल पड़ा. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है ये उसी वजह से. I shall be telling this with a sigh. When we are summing up it in English, I shall be telling this with a sigh. Then someday I'll be heaving deep breaths and saying the people somewhere ages and ages hence in the future, I'll be telling other people that two roads diverged in a wood, that once I experienced in a wood, I got the option of two roads to go through, and I took the one less travelled by. I suppose that one that had more grass upon it was travelled by less people, and I took that, and that has made all the difference. If I am successful, it is because of that road which I took by that time, that I took that, I initiated, and it made me successful. If I am now unsuccessful, then it is because of that road which I chose. Thus, the life of mine was defined because of my choices which I made in the earlier age. तो ये इस पोएम की पूरी समराइजेशन है. तो अब इस पोएम में कुछ पोइटिक टेक्निक्स भी हो सकती है, थोड़ा उस पर देखेंगे. तो first and foremost poetic technique is, we are having here the name of the poem, that is to the road not taken. The road not taken, it is symbol, a word that represents some different idea. The road here is the symbol for the choice of the life. रोड सिंबल है चॉइस ऑफ लाइफ के लिए. तो उसके बाद हमारे पास एक और पोइटिक टेक्निक यहाँ इसमें आई है, दैट इज अनाफोरा. Anaphora, what is anaphora? Anaphora is usage of the same word in the beginning of one or more lines of a sentence. एक और या एक से दो या दो से अलावा लाइन्स में जब एक ही वर्ड से शुरुआत होती है तो इस पोइटिक टेक्निक को अनाफोरा कहते हैं. वी कॉल इट द सेम वर्ड इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ two or more lines of a stanza. Here we see in the second line and, in the third line and in the fourth line and. तीन लाइन्स में एंड आ चुका है और ये शुरू होते हैं इन्हीं से. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक डाउन ऑन वन एज फार एज आई कुड. ये एनाफोरा इसमें है. तो इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे स्टेंजा में क्या आता है. In second stanza, when we look upon it, we are finding the alliteration. Alliteration is a poetic technique in which we see that more than two neighboring words are beginning with this consonant letter or beginning with the same sound. Here we can see different words. In this, we are having wanted wear. तीसरी लाइन में है wanted wear. ये हमारे पास यहाँ alliteration है. यहाँ वाज भी है, वाज वांटेड भी है. तो इसी तरह हमारे पास एक और लाइन में, चौथी लाइन में दो
that, the, their, ये चार वर्ड एक ही लाइन के एक ही लेटर से एक ही साउंड से शुरू होते हैं. So there are two examples of alliteration in this stanza. Then moving to the stanza third, we are having here now stanza third. यहाँ हमारे पास है this again alliteration, that is first and for. In the third line, first and for, it is alliteration. And another thing that is there is, maybe we'll finding it in the stanza 4. We're having another poetry technique here, repetition. Repetition means repeating the same word 2 times or more times in a same sentence. This, we are finding here a repetition, that is in the second line. It is ages and ages. To create the effect, it has been used here. It is called a repetition. And one more repetition we are finding. If we will, here we are having a sentence. Two roads diverged in a wood and I. And first line we are having, two roads diverged in a yellow wood. These two lines, taking one from stanza first and second from second up fourth, it is the repetition again in the poem. So these are the poetic techniques that are there in the poem. Hope I could make you understand this poem in a better way. If you still have certain doubts, you may call me on my number 7006 121241, or you may WhatsApp on the same number.